we started yesterday. Okay, this is the part two of the Casa furnishing products which we reviewed yesterday as well. तो आज हम अपनी formal आपको collection थोड़ी दिखाएंगे, and those who have missed us yesterday can get back to us for the pieces they have missed yesterday, but we can go back to the products here we showed yesterday because we this gala is for the next 10 days anyway. So on the platform of eBuild, I'm thankful for them to start showing my products. So we just gonna start from one of our formal collection of sofas. If we can just walk a bit towards this end. Okay, this is our one of the highlighted seven-seater sofa, antique finished, and a really sleek carving sofa. If you look at it, the curve is the main highlight of the sofa, and the detailing of the carving designs on this. So it's different from the routine Gaudi kind of carving you see every day wherever you are. I mean, हम बचपन से अपने सोफे घरों में ड्राइंग रूम के देखते आ रहे हैं, but this is a totally different piece क्योंकि इस पर डिटेलिंग और कुछ थोड़ी डिजाइनिंग रूटीन से हटके है. If you look at the finish of this, we call it antique leafing effect. लीफ इफेक्ट के साथ इस पे टू टोन्स का एक कॉम्बिनेशन हुआ हुआ है, और आई मीन सिल्वर और गोल्ड की कॉम्बिनेशन है. इट्स नॉट अ टिपिकल टू गाउडी गोल्ड. आई मीन इट्स वेरी डल एंड एंटीक लुक. आई मीन आम रूटीन से हट के डिफरेंट है, एंड आई एम प्रीटी श्योर not everybody has got this kind of finish. Okay, if you go back and we can see the bottom of the sofa, the detailing is there as well. And if you look at even the legs of the sofa, इसके अंदर भी काफी detailing है. The design continues to have bit of a break from everything. Beads हैं, grooves हैं, flowering है. फिर इसका पूरा एक I mean every character of the even the leg of the sofa has a character as well. Then there is a continuity to the sofa base as well, like a pillar look on the arms. Instead of having a typical सिर्फ एक plain सा flowery इसका बाजू नहीं है, इसके आगे एक पूरा सा एक आगे extended type का pillar बना हुआ है. ठीक है. So there is a lot of things added on to it. I mean, instead of having high backed carved फूल किस्म का ताज वाला sofa, it's different from that. Okay. So this is a seven-seater, which is like 3 plus 2 plus 1. Okay. Now we move on to another piece of art. It's a huge, big divan. और इसके मिडल में ये एक राउंड किस्म का एक बैक बनी हुई है, which is there to support your back as well. Otherwise, it's more cosmetic. और इसके अंदर ये carving के हमने एक दी हुई है, और इसको एक थोड़ा सा हमने राउंड शेप दिया है. If you look at it from the arms, it's not a typical straight one. इसके corners पे काफी round है, which is spacious as well. If I sit on it, then I have a relaxing feel to this sofa as well. कि ये typical बिल्कुल वो नहीं है कि सीधे किस्म का बाजू है, राउंड हो रहा है, तो मेरी बॉडी बड़ी आराम से यहाँ पे एब्जॉर्ब हो रही है. And I feel that there is still a lot of space for at least 2 to 3 people to sit on it. So basically the size wise is there like a 3.5-seater, but it's a very beautiful piece. इसके आगे ये फ्रंट पे कर्व है. It's not a straight one. ये maybe if you can notice it, इस पे कर्व का एक feel है. It's not straight, and the carving goes along with it as well. And then if you look at the legs, if the arms, extended legs, arm से leg इसके आगे एक join हुई है. These are not separate. If you look at it, it's like an arm going up to the leg. ये दो हिस्सों में हमने divide नहीं किया. एक ही leg extend होके ऊपर arm की look में आ रही है. Okay. Okay, to match with this sofa, we have an antique finished table set here as well. And if you look at it, the detailing of the carving, there's a Versace border on the top, and beneath that we have a carving going all the way around. और arm center table से इसका size भी जरा बड़ा है. It's almost like 4 feet. और ये table set इसका बड़ा एक है, और एक दो इसके पास हमारे छोटा सेट होते हैं. Normally the table sets are always in 3 pieces, 1 large and 2 small. Okay, and in this sitting, we're just gonna end up with 2 of our round carved chairs. I mean, these can be categorized as something like, you can say, modern based as well. Even it's a bit of a formal look as well. Back इसकी बहुत खूबसूरत है, round है,
इसको हमने कलर उससे डिफरेंट थीम का दिया है, इतना ज्यादा गोल्ड रखा हुआ है, सो यू कैन गिव अ ब्रेक इनटू सीटिंग एज वेल, कि हम एक ही सीटिंग में कोई चीज ऐड कर लें। आजकल ड्राइंग्स में बहुत सारी सीटिंग्स चल रही हैं जो हम किसी कॉर्नर को हाईलाइट करने के लिए इनको अलग भी रख सकते हैं। ये एक सीटिंग भी हो सकती है और इसको हम अलग भी रख सकते हैं। And on top of that, these can go anywhere in the lounge or drawing on its own as well. Okay. Now we move on to two different types of sofas. Again formal, again for all the drawing room sofas. If you look at this sofa, it's a Victorian style. If you look at from the back, इसकी नीचे आप legs को भी देखें, और it's a Victorian style, again curvy, and the added legs are just for there to look at more like a proper Victorian Italian look. ठीक है? I mean, not a typical carving again. The top has curves. Wherever the carving is required, it's very well balanced. And again, the carving is just there to add a bit of a character. ठीक है? It's not typically like a proper classical 30s का पुराना डिजाइन नहीं है। इसके अंदर हमने दो तीन चीजों को मॉडिफाई किया है और उनको कोलैबोरेट करके विक्टोरियन डिजाइन बनाया है। अगेन द फिनिश इज वेरी एंटीक लुक, गोल्ड एंड सिल्वर का एक मिक्सचर किया हुआ है, which looks, it's not a typical drawing room item which is all gold, क्योंकि लोग हमारी फिनिश की वजह से हमें रिकॉग्नाइज करते हैं कि इस फिनिश में नॉर्मल टिपिकल मार्केट वाली लुक नहीं आती है। ठीक हो गया? Okay, and now we move on to another 7-seater sofa of ours, which is round backed. और इसका जो मेन कैरेक्टर जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है कि राउंड होने के अलावा इसके मिडल में हमने एक carving का एक फीचर दिया है in the middle, which is going all the way around from the top like a crown in the middle and going extended piece into this. So सोफे के मिडल में इस तरह की लुक वाले सोफे बहुत कम कहीं पे आपको नजर आते हैं। Okay, so that's the main character. And then again, the arms are very differently sleekly made, the legs are very sleek, and the carving is very limited wherever it's required to give it a bit of a different look from all the sofa. और अगर आप इसकी सिंगल सीट को देखें, it's bigger than a normal single seat because it's round. Again, this is there for a character. Comfort wise, it's still very good. Again, if I'm sitting here, the back of the carving piece is not bothering me. That's just there in the depth. It's not gonna touch your back, क्योंकि ये सिर्फ एक डिजाइन एलिमेंट है, बाकी ये फैब्रिक और इसकी जो फॉर्म है वो आगे करके लगा हुआ है इस तरह कि आपकी बैक को ये सपोर्ट देता है. This part is not gonna bother you. It's just there to look good. And we can add cushions here as well. Okay. And another beauty of this sofa is the back of this sofa. If you come and look at the back of this sofa, it has a diamond quilted look on the back. अगर सोफा बैक से भी कहीं पे पड़ा हुआ है आपके ड्राइंग में और कहीं पे भी आपके इवन जो ओपन है, ठीक है, कुछ हमारे सोफास तो दीवार के साथ जुड़ जाते हैं, लेकिन अगर कोई सिंगल या 2-सीटर आपका ओपन एरिया में भी पड़ा है तो इट लुक्स ब्यूटीफुल फ्रॉम द बैक एज वेल, और फिनिशिंग बैक पे भी उतनी ही अच्छी है जितने इसके फ्रंट पे है. Okay, let's move on to one of our last part of the review today. This is an antique finish, a piece of art dining table. If you look at the details of the chair, it's a leaf effect chair of the back of the chair, and it's like plants or trees, और ये पत्तियां की एक पूरी एक बेल सी नीचे तक जा रही है. Then there's a border of beading here. ये और क्राउन की एक बड़ी सिंपल सी एक लुक है. इट्स नॉट लाइक अ टिपिकल ताज वाली कोई चेयर. इट्स अ वेरी स्लीक पीस. ओके, एंड दिस इज गिविंग अ बिट ऑफ अ कैरेक्टर इनटू दिस, कि ये ऐड 2-3 चीजों को ऐड हुआ है. एंटीक फिनिश अगेन इज द मेन हाईलाइट. सिल्वर गोल्ड की एक फिनिश है. फैब्रिक इस पे अगर आप देखें तो टेक्सचर्ड किस्म का है प्ले, जो इसको गोल्ड के साथ कॉम्प्लीमेंट कर रहा है. ठीक है. एंड देन वी लुक एट द पिलर ऑफ दिस टेबल. इफ यू लुक एट द टेबल्स पिलर from the top as well, इसके अंदर भी ठीक ठाक डिटेलिंग है. इसके अंदर ऊपर कार्विंग का एक फूल है. इसके पिलर के अंदर एक बॉर्डर्स है. एंड इफ यू लुक एट द बॉटम ऑफ द पिलर, इसके अंदर भी ठीक ठाक ये इसकी अपनी गुलाइयां, पत्तियां और फूल और लॉट ऑफ थिंग. एंड इवन द बेस ऑफ द टेबल, the base of the pedestal is also highlighting this. So very heavily built to support the mirror, the table glass, and a piece of art. One of my favorite pieces. Okay, so
I would say, okay, so I will just give a brief recall to the items we showed yesterday. Yesterday we showed the modern items, leather items, and if somebody's missed them, we can always go back and show you all those items again as well, because we have a collection of modern, contemporary style, and the formal classical look as well. So I will keep showing you all these products over the next few days. So in case if anybody's having queries, they can always contact me or my platform of Casa Furnishings through obviously team that we built, and obviously they are part of this. So we both here to help you in any regards. Thank you.